Assalamu alaikum, everyone. Let's begin with this. So in this session, we are going to be doing November 2022, paper 1, variant 3. We have already covered all the papers from 2021, 2022, and 2023. Apart from the October-November session, we're done with the rest of them. You can find the link for that in the description below. Along with that, you'll find a lot of other useful content in the description. For example, I've uploaded all of the syllabus recordings for paper 1, paper 3, M1, and S1. You can find that in the link below and also in the links below, and also some quick revision videos along with that, which a lot of students find very helpful every single year for their last minute revision. You can also find that in the description below. Okay, so in this session, we will be doing paper 1, variant 3, and then around 8 p.m. inshallah today, we will be doing M1, paper 4, variant 3 from this session as well, which was one of the harder papers in recent times on mechanics. So that's what we will be doing later tonight, inshallah. Okay, so let's start this session then. Walaikum assalam, Saad. In this session, we will be doing October-November 2022, paper 1, variant 3. Let's begin with this. All right, so it says, first of all, solve this equation 8 sine square theta plus 6 cos theta plus 1 equals 0 for theta between 0 and 180 degrees. Now, how do we start with this? So it's an equation that we need to solve. How do we solve equations, trigonometric equations? We want to convert the equation to a form that has only one trigonometric function. Okay, we have sine right now and also cos. So हमें एक में convert करना है. What we can do is we can convert sine square to cos square, right? Because sine square or cos square में हमारे पास एक connection होता है. We know that sine square plus cos square equals 1. So we can write this as 8 into 1 minus cos square theta, right? Sine square की जगह पे 1 minus cos square लग गया, plus 6 cos theta plus 1 equals 0. This is the equation that we need to solve. Okay. अब इसको solve कर लेते हैं. We have 8 minus 8 cos square theta plus 6 cos theta plus 1 equals 0. What do we get from this? Minus 8 cos square theta plus 6 cos theta plus 9 equals 0. पूरी equation को अगर हम minus से multiply कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 8 cos square theta minus 6 cos theta minus 9 equals 0. It's just that just because we normally prefer having the first term positive, so उसलिए minus multiply कर दें, but that's your choice. If you don't want to do that, आप इसके बगैर भी कर सकते हैं. अच्छा, now what we can do is we can use a substitution. हम cos theta को किसी और letter से substitute कर सकते हैं, C से कर लें, U से कर लें, whatever you want. So this could be written like this. We could say this as if we convert it to U, if let U equals cos theta, we can write this as 8U squared minus 6U minus 9 equals 0. Now, can we factorize this? Let's think about this. 8 into 9 is 72. Minus करके हमारे पास के factors हो सकते हैं जो 72 आते हो 12 and 6. Yeah, so we could use 12 and 6. So it becomes 8U squared minus 12U plus 6U minus 9 equals 0. Now we can factorize this. We get two factors from this. 4U minus, no, in fact, अगर हम यहाँ से 4U common ले लेते हैं, that leaves us with 2U minus 3 plus 3 into 2U minus 3. We get two factors, 4U plus 3 and 2U minus 3. These are the two factors that we have. This gives us either U equal to minus 3 over 4 or U equal to 3 over 2. These are the two results that we're getting from this. What we can do at this point is we can put the substitution back. हमने cos theta को U assume किया था. We can say cos theta equals minus 3 over 4 or cos theta equals 3 over 2. Okay, now let's solve these two equations. First of all, let's look at this one. We say cos of alpha equals 3 over 4. Basic angle figure out कर लेते हैं. Let's do this on our calculator.
एंगल डिग्रीज में है तो आपने कैलकुलेटर अपना डिग्रीज मोड पे रखना है, एंड यू हैव टू फाइंड cos inverse of 0.75. What does that turn out to be? So this is giving me 41.41 degrees. That's the basic angle that I'm getting from this. Now think of the quadrants you can be in. Cos is negative. Negative cos kahan par hota hai? Remember, cos is positive in the first and fourth quadrants. So second or third mein negative hoega. However, if you look at the interval that's given, that's from 0 to 180. That means third quadrant with third में तो नहीं हो सकता है, right? First या second में हो सकते हैं. सिर्फ ये वाला eliminate करना पड़ेगा. There's only one option that you have. That is the second quadrant. So this angle is 41.4 here. What value of theta do we get? Theta equals 180 minus 41.4. Let's see what we get from this. 180 minus this, that is giving me 138.6 degrees. That's one answer that we're getting. Okay. Now let's look at the other equation. The other equation is cos theta equals 3 over 2. Now if you think about this, cos to minus 1 और 1 के दरम्यान में होता है. 3 over 2 is 1.5. That's outside the interval, so that is not going to give us any solution, right? इससे कोई result आपको नहीं मिलेगा. तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे this is not possible. आप चेक भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर में डालेंगे, आप cos inverse of 3 over 2 करेंगे, आपको एरर मिल जाएगा. That means it does not have any solution. Okay, so we have only one answer here, 138.6, and that's it. Let's move on. Question number 2. Now we have functions. It says the function f is defined by f of x equals minus 2x squared minus 8x minus 13 for x less than minus 3. ये आपको एक domain दी हुई है. We need to express f of x in the form minus 2 into x plus a whole squared plus b, where a and b are integers. So सबसे पहले आपने square complete करना. Now how can we do that? One possibility is we take minus 2 common. Minus 2 common लिया, अंदर आपके पास क्या रहा? First two terms में से अगर common लेते हैं, we're left with x squared plus 4x. Leave some space. Outside you have minus 13. And now what we do is we divide 4 by 2. That's 2. And we add 2 square and also subtract 2 square. And now the first three terms are going to give us a perfect square. So we're going to take x from here, plus from here, and 2 from here. And we have x plus 2 whole squared minus 4. Outside we have minus 13. Now simplify this, we get minus 2 into x plus 2 whole square. Minus 2 को minus 4 से भी multiply करना है, remember? So it becomes plus 8 minus 13. And f of x therefore turns out to be minus 2 into x plus 2 whole squared minus 5. And that is what we were looking for in this first part. Okay, so that's our final result here. We have completed the square. Okay, let's move on. Now it says find the range of f. All right, range कैसे find करें? Range के लिए remember आपको domain का ध्यान रखना होता है. ये quadratic functions में जब हम range find कर रहे होते हैं, we have to keep in mind two things. Domain क्या given है, उस domain के जो end points है वो check कर सकते हैं, और इसके साथ आपको turning point पे देखना क्या हो रहा है. Turning point अगर domain के अंदर आ जाए, अब इसका देखिए turning point क्या होगा. First of all, how does this curve look like? U shaped होगा या N shaped होगा? X का coefficient negative है, right? तो इसकी जो graph की shape होगी, that is N shaped like this. ठीक है. अब टर्निंग पॉइंट क्या है इसका? टर्निंग पॉइंट अगर आप यहां से देखें, +2 इसका साइन फ्लिप करेंगे, दैट्स -2, -5 इज द y कोऑर्डिनेट. ये आपका टर्निंग पॉइंट है. बट व्हाट्स द डोमेन? द डोमेन इज x लेस देन -3. -3 कहां पर आ रहा होगा? अगर आप देखें हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, this is -2. -3 is going to be to the left of this. So -3 might be somewhere here. तो -3 पे जो पॉइंट होगा आपके पास यहाँ पे, that is going to be to the left of the turning point. तो क्योंकि आपकी डोमेन x लेस देन -3 है, आप इस ग्राफ का कौन सा वाला पार्ट कंसिडर करोगे? सिर्फ -3 के लेफ्ट वाला. So that means only this part of the graph is relevant. तो टर्निंग पॉइंट आपका उसमें इंटरवल में आ ही नहीं रहा. तो आपको क्या करना पड़ेगा?
आपको -3 के ऊपर इसका पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा कि -3 पे आपको क्या रिजल्ट मिलता है। ठीक है, लेट्स फिगर दैट आउट। f of -3, let's evaluate that। x की जगह -3 डाल दें कैलकुलेटर में, making sure you're using brackets properly because x की वैल्यू नेगेटिव है, ब्रैकेट्स में डालना है इसको properly। Let's see what that gives me। -3 into -3 whole squared, -8 into -3, -13, and that is giving me -7। इसका मतलब ये हुआ है, जो पॉइंट आ रहा है that is -3 -7। तो vertically what is going to be the range now? It's going to be everything less than -7. -7 से नीचे वाला part is relevant, so we say the range therefore is y less than -7। उसमें -3 के साथ equal to नहीं डाला हुआ था, तो हम -7 के साथ भी equal to नहीं डालेंगे। ठीक है, ये ऐसे लिखेंगे y less than -7। That's the range that we were looking for। Now the next part says find an expression for f inverse of x। Remember, quadratic functions के inverse जब आपने find करने होते हैं, you always have to use the completed square form। आपने square already किया हुआ है, square already complete किया हुआ है, तो आप वो वाली form use करोगे। We'll say f of x equals -2 into x plus 2 whole squared -5। And now, how do you start? You say let y equals f of x, and that gives you y equals -2 into x plus 2 whole squared -5, and you need to make x the subject now। Take 5 to the other side। इसको इस तरह से लिख लेते हैं, -2 into x plus 2 whole squared। दूसरी साइड पर अगर हम 5 लेकर जाते हैं, we get y plus 2, y plus 5। Divide 2 on the other side now, x plus 2 whole squared equals, माइनस से डिवाइड कर दें उस साइड को, तो आपके पास इससे क्या आ रहा होगा, माइनस इंटू वाई प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। नाउ प्लीज डोंट जस्ट पुट माइनस विद वाई हियर। अगर आपने माइनस ऊपर लिखना है तो ब्रैकेट्स यूज करें, अदरवाइज आप नीचे लिख दें माइनस, दैट्स ऑल्सो ओके। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं कि माइनस आप नीचे लगा दें, दैट्स ऑल्सो फाइन। ऊपर लगाएंगे तो आपने ब्रैकेट्स के बाहर लगाने। ठीक है, अच्छा, नाउ वी टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, बट रिमेंबर व्हेनेवर वी टेक स्क्वायर रूट we have to put plus minus। all right, let's take square root। हमारे पास क्या आ जाएगा, square root of minus into y plus 5 divided by 2, but outside we're going to have plus minus like this। ठीक है, and now take 2 to the other side, that gives you x equals -2 plus minus square root of minus into y plus 5 divided by 2। अब आप इसको इनवर्स फॉर्म में लिखना है, लेकिन बिफोर यू डू दैट, एट दिस पॉइंट व्हाट यू शुड डू इज यू शुड फिगर आउट वेदर यू गोइंग टू टेक प्लस हियर और माइनस हियर। इसमें से प्लस वाला साइन यूज करना है या माइनस वाला साइन यूज करना है। अब वो कैसे देखेंगे, आपको डोमेन दी हुई है यहाँ पे फंक्शन की, द फंक्शंस डोमेन इज x लेस देन -3, सो कीप दैट इन माइंड। x की वैल्यू जो है फंक्शन के अंदर वो -3 से कम हो सकती है। इसका मतलब ये है आपके पास यहाँ पे जो हमने x को सब्जेक्ट बना लिया, x has to be less than -3। -3 से छोटी वैल्यू आपके पास कैसे आएगी, -2 में हम कुछ प्लस करेंगे तो -3 से छोटी वैल्यू होगी, बड़ी होगी, उससे तो बड़ी वैल्यू आएगी। -2 से हमें कोई चीज माइनस करनी पड़ेगी, फिर हमें -3 से कम वैल्यू मिलेगी, राइट। सो वी आर गोइंग टू चूज the negative sign from here, not the positive sign। okay, and then when we write the inverse function, we would say f inverse of x actually becomes equal to -2 minus square root of minus into x plus 5 divided by 2, and that is going to be your inverse function। okay, I hope that makes sense। Walaikum assalam। Anas, that's a good question। So Anas is saying यहाँ पे तो माइनस आ गया अंदर, माइनस का तो स्क्वायर रूट हम ले ही नहीं सकते। देखें, y is a variable, right? y is a variable, तो y की यहाँ पे फिर ऐसी कोई वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल अगर आप y की वैल्यू यहाँ पे 10 डालते हो, सॉरी -10 डालते हो, तो ये वाला पार्ट नेगेटिव हो जाएगा ना, -10 प्लस 5, ये पार्ट नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस इंटू दिस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो अंदर वाला पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये इनवर्स फंक्शन सिर्फ तब वैलिड होगा जब y की कोई ऐसी वैल्यू होगी
कि अंदर वाला पार्ट पूरा पॉजिटिव हो जाए, एंड देन दिस इनवर्स वुड बी वैलिड, राइट? सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, क्योंकि अंदर वेरिएबल भी आ रहे हैं ना y+5, तो वो खुद से पॉजिटिव हो जाएगा स्क्वायर रूट लेने से पहले, अगर आपको इवैल्यूएट करना, ठीक है? तो yeah, so that's how it's going to be. Let's move on. Question number 3. It says, find the first three terms in ascending powers of x in the expansion of 1 plus 2x whole raised to power 5. So this is binomial. Binomial का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? ये आप फॉर्मूला शीट अपने सामने रखेंगे, इसमें थोड़ा सा अलग तरह लिखा होता है, बस नोटेशन डिफरेंट यूज की होती है, उसमें NR notation यूज की होती है, that's the same as NCR. Okay, तो उसका बस फॉर्मूला लिख सकते हैं. This is actually a raised to power n plus NC1 into a raised to power n minus 1 into b plus NC2 into a raised to power n minus 2 into b square and so on. ठीक है, आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं होती है, आप फॉर्मूला शीट अपने सामने रखेंगे, उसको आप यूज कर सकते हैं. You just have to use this formula. Okay. Achha, now how do we use this formula? We have 1 plus 2x whole raised to power 5. A की जगह पे क्या आ रहा है? 1. B की जगह पे क्या आ रहा है? 2x. So we just input those values here. A raised to power n. So that's 1 raised to power 5. Remember, n is 5. So we have 1 raised to power 5 plus NC1. That's 5C1 into a raised to power n minus 1. That's 1 raised to power 4 into b, which is 2x. Plus NC2, that's 5C2 into 1 raised to power 3 into 2x whole raised to power 2. Now, we needed the first three terms, and we have got those three terms now. This is the first one, the second one, the third one. We've got the three terms. We don't have to expand any further. We just simplify these terms, and that's it. So we have 1 plus 5C1 is just 5. 5 into 2 is 10, so that's 10x. Plus 5C2 is 10. 10 into 2 ka square, that is 4. So that's going to be 40. 10 times 4, that's 40. 40x square, and so on. This is the result that we get from this. Okay. Okay, now it says find the first three terms in ascending powers of x of this expansion. Okay, so now this is just another application of binomial. Let's do that. We have 1 minus 3x whole raised to power 4. Again, input values in the formula. In place of a, we have 1, but remember, in place of b now, we have negative 3x. Minus sign उसके साथ ही आ रहा है b के साथ. ठीक है, तो आपने जब input करना है, b के value minus 3x input करनी है. n is 4. Let's input values in the formula. A raised to power n, so that's 1 raised to power 4 plus 4c1 into 1 raised to power 3 into minus 3x. Okay, plus 4c2 into 1 raised to power 2 into minus 3x ka whole squared. Okay, please make sure you put these values in brackets properly ताकि आपका minus sign सही तरह से आ रहा हो वहाँ पे. And now you needed only the first three terms. इसको simplify कर लें, देखें आपके पास क्या आता है. You have 1 plus 4 into minus 3x. इसको एक step और दिखा देते हैं यहाँ पे. 4 into minus 3x, right? 4c2 is 6 into minus 3x ka whole square. That's 9x square. Now you just simplify this and see what that gives you. 1 minus 12x plus 9 into 6, that turns out to be 54x squared. Okay, this is the expansion that you were looking for here. Let's move on. Now it says, hence find the coefficient of x squared in this expansion, 1 plus 2x whole raised to power 5 and 1 minus 3x whole raised to power 4. इस एक्सपेंशन में आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकालना है. अब देखिए उसने फर्स्ट थ्री टर्म्स आपसे ऊपर इसलिए निकलवाई हैं क्योंकि आप उसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं. यू हैव 1 plus 10x plus 40x square into 1 minus 12x plus 54x square. ये दो आपके पास एक्सपेंशंस है. इनके प्रोडक्ट में आपको क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर निकालना है. Now you don't have to expand this whole thing. आपको बस देखना है कौन सी टर्म्स को मल्टीप्लाई करने से आपके पास स्क्वायर आ रहा होगा. ओके, फर्स्ट ब्रैकेट में हर टर्म को देखें कि उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा. सो फॉर इंस्टेंस 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी ब्रैकेट में कि एक्स स्क्वायर आए, 54x स्क्वायर से. ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर आएगा. 10x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें x वाली टर्म से, यानी कि -12x है.
और 40x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। ये 3 मल्टीप्लिकेशंस आपने करनी है। Yes. So what does it give us? 1 into 54. So this is what we are doing. 1 into 54x² plus signs का ध्यान रखना है 10x into minus 12x plus 40x² into 1. Let's evaluate this. This turns out to be 54x² minus 120x plus 40x². Let's see what this turns out to be. 54 plus 40, that is 94. 94 minus 120, that should give you minus 26. So this is minus 26x². We were looking for coefficient of x². तो हम क्या कहेंगे? Coefficient क्या आ गया? Coefficient of x² is minus 26. This is what we were looking for. ये आपका coefficient. ठीक है, that's your final result. Okay. अच्छा. Taha, I don't have the list right now. If you remind me at the end, मैंने एक PDF बनाया हुआ जिसमें मैंने सारे thresholds एक ही उसके अंदर किए हैं PDF के अंदर. तो I can have a look at that and tell you कि कहाँ पे P1 के मुश्किल questions आ रहे हैं. P1 के thresholds कम है. अच्छा. और S1 arrangement you can send them to me on Instagram. I will see if I'm able to respond to that. But that's not going to be before 5th May. ठीक है, 5th May तो कोई M1 का exam है, उसके बाद I'll be able to respond to that. You can leave them there, and maybe I can give your direction कि उसमें क्या कर सकते हैं. अच्छा, hence means using the previous answer. Yes. Okay. All right. अच्छा, let's move on. Question number 4. A large industrial water tank is such that when the depth of the water in the tank is x meters, the volume V in the tank is given by this. Okay, volume of tank is given here. We need, so we are told that water is pumped into the tank at a constant rate of 3.6 meter cube per hour. Find the rate of increase of the depth of the water. Because the depth को किससे represent किया हुआ? उसने कहा depth is x meters, right? So we need to find the rate of increase of the depth of the water when the depth is 4 meters, giving an answer in centimeter per minute. Okay, so that's another complication that we have because we have meter cube here. यहाँ पे वो centimeter में मांग रहा है. अच्छा, let's think about this now. हमारे पास कौन से variables हैं? एक तो x variable है, एक volume है, right? And तीसरा time होएगा because ये per hour आपके पास rate दिया हुआ, rate की बात हो रही है, तीसरा time variable है. आपको क्या information given है? उसने कहा water is being pumped at a rate of 3.6 meter cube per hour. तो rate of increase of water is 3.6. अब इसको कैसे लिख सकते हो? You can say this is dV over dt. This is what we are given, and that is 3.6 meter cube per hour. These are the new units that they're using, meter cube and hours. Okay. Now, what we want to find is the rate of increase of the depth of the water. यानी depth is x, तो हमें find करना है dx over dt. ये find करना है किस point के ऊपर? When the depth is 4, when x is equal to 4. ये find करना है. And we know a formula for volume. Volume is equal to 243 minus 1 over 3 into 9 minus x whole raised to power 3. So हम क्या करेंगे? चेन रूल यूज करेंगे. dx over dt फाइंड करना है. इससे हम dv over dx निकाल सकते हैं. Let's differentiate it and find dv over dx. The derivative of 243 is just 0. Derivative of this term, what is that going to be? We have minus 1 over 3, multiply that by 3 into 9 minus x. Power में से 1 minus कर दें, 3 minus 1, it becomes 2. और फिर जो अंदर वाला पार्ट है 9 minus x, इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना है, वो क्या हो जाएगा? -1. ठीक है, now simplify this and see what that gives you. You have minus here and a minus here, ये plus हो जाएगा. 3 and 3 get cancelled and you're just left with 9 minus x whole squared. That is dv over dx. Okay, अब क्या करें? चेन रूल में इनपुट कर दें. आप x की वैल्यू भी डाल सकते हैं यहीं पे और बाद में चेन रूल में डाल दें, या आपकी मर्जी है. ठीक है, so let's input x
right here because आपको किस पॉइंट पे चाहिए, when x equals 4. x equals 4 पहले नहीं डाल देना यहाँ पे वॉल्यूम में, जब डेरिवेटिव ले लेंगे उसके बाद उस डेरिवेटिव के अंदर इनपुट करना है. Let's see what dv over dx turns out to be when we input x equal to 4. So we have 9 minus 4 whole squared, and that gives us 5 squared, which is 25. So we have dv over dx equals 25. Now, what do we want to find out? We want to find out dx over dt. ये फाइंड करना है, इसके लिए हम चेन रूल यूज करेंगे. चेन रूल कैसे होगा? फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर dx होगा, सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर dt होगा, और दरमियान में फिर आपके पास जो स्पेसेस हैं यहाँ पे हमारा थर्ड वेरिएबल आ जाएगा. ठीक है. Now, what's the third variable? The third variable is volume here. So that's dv and dv here. Let's just input values now. dx over dv, that's going to be reciprocal of this. So that's 1 over 25. Into dv over dt, that's given, that's 3.6. And that's going to give you dx over dt. ठीक है. dx over dt हमारे पास यहाँ पे क्या आता है? Let's evaluate this. 3.6 divided by 25. All right, what do we get from this? This is giving me 0.144, or you can say 18 over 125. ठीक है. This is what dx over dt is turning out to be. But remember, आपके पास units क्या थे? Units आपके पास थे मीटर एंड आवर्स. तो ये जो आपके पास ये रिजल्ट आया है, x represents depth, height, वो उसका यूनिट क्या होगा? मीटर्स. And then hours, so this is meter per hour. That's the unit that you have here. Per hour इतने meters आपका ये रेट है. उसने क्या कहा है? सेंटीमीटर्स पर मिनट इसमें कन्वर्ट करना है. ठीक है. अच्छा, अब now how do we do that? Meters to centimeters क्या होता है आपके पास? 1 meters is 100 centimeters. And hours to minutes, 1 hour is 60 minutes. तो आप क्या करेंगे? Remember ये meters ऊपर आ रहा है, right? और hours नीचे आ रहा है. तो meters को आपने क्या करना है? सेंटीमीटर्स में डालना है, कन्वर्ट करना है. तो ऊपर क्या करें? 18 meters है, उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें, वो सेंटीमीटर्स में हो जाएगा. डिनोमिनेटर आवर्स में है, 125 आवर्स. तो आवर्स को मिनट्स में करने के लिए क्या करेंगे? उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दें. You say this is 125 over into 60 and see what that turns out to be. 18 into 100 divided by 125 and 60, and this is giving me 6 over 25, which is 0.24. 0.24, and this is now in centimeters per minute. That's what we were looking for. ठीक है. ये हमारे पास rate of increase of the depth of the water आ गया. All right, let's move on. Question number 5. Now this is the diagram shows a curve which has a maximum point at 812 and a minimum point at 80. The curve is the result of applying a combination of two transformations to a circle. The first transformation applied is a translation of 7 minus 3. The second transformation applied is a stretch in the y direction. State the scale factor of the stretch. Okay, आपको ये डायग्राम नजर आ रही है और ये रिजल्ट है दो ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करने का. So this is the final result that you're getting after that. वो कौन सी दो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं? The first transformation is a translation of 7 minus 3. And the second transformation is a stretch in the y direction. Stretch in the y direction, right? So we need to first of all state the scale factor of the stretch. Now, how does that work? देखें, translation से तो आपकी फिगर का साइज नहीं चेंज होता, वो सेम ही रहती है. ठीक है. तो ट्रांसलेशन तो साइज में कोई फर्क नहीं पड़ा होगा. लेकिन जो दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है? There is a stretch in the y direction, vertical stretch है. तो वर्टिकली आपका जो उसका है ग्राफ जो है वो स्ट्रेच हो गया होगा इस पार्ट के स्ट्रेच की वजह से, राइट? तो वर्टिकली मूवमेंट हुई भी है. तो अब वो कितना स्ट्रेच हुआ होगा? आप सोचें, ये सर्कल था इनिशियली, हॉरिजॉन्टली तो कोई चेंज नहीं आई है,
हॉरिजॉन्टली कोई चेंज नहीं आई है, तो इसका मतलब है इसका जो सेंटर अगर हम यहाँ पे होता, लेट्स अज्यूम, तो रेडियस कितना होना चाहिए था इसका? 2 यूनिट्स, राइट? तो फिर सर्कल बनाने के लिए जो इसका वर्टिकल होगा वो भी 2 यूनिट्स ही होना चाहिए था। तो ये आपका इस तरह से कुछ सर्कल हो सकता था, राइट? अब क्या हुआ है, ये वर्टिकली 2 यूनिट्स के बजाय कितना हो गया? 6 यूनिट्स हो गया स्ट्रेच, ठीक है? तो 2 से आप 6 यूनिट्स पे चले गए हो। व्हाट इज द स्केल फैक्टर? 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा? 3। द स्केल फैक्टर दैट यू हैव इज 3। सो एसेंशियली वर्टिकली आपने y कोऑर्डिनेट्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। That's what has happened. अच्छा, now let's look at the second part. It says state the radius of the original circle. Now we already figured that out. Radius क्या होना चाहिए था original circle का? 2 units, right? So let's write that here. Radius should have been 2 units. Part C. It says state the coordinates of the center of the circle after the translation has been completed, but before the stretch is applied. अच्छा, so stretch को आपने reverse करना है. Stretch को reverse करना है. ओके अब ये कौन सी स्ट्रेच है? वर्टिकल स्ट्रेच है, वर्टिकली ग्राफ मूव हो रहा है। ओके वर्टिकली ग्राफ मूव हो रहा है। अब देखें, वर्टिकल ग्राफ जब मूव होता है, आपका जो रेफरेंस लाइन होती है, इनवेरिएंट लाइन, वो आपकी एक्स एक्सिस होती है। एक्स एक्सिस से आप देखते हो डिस्टेंस कितना हो गया। नाउ लुक एट दिस पॉइंट जो 12 पे चला गया है। स्केल फैक्टर आपका क्या था? 3 यूनिट्स। तो 12 पहले क्या था? जब 3 से मल्टीप्लाई होकर 12 पे चला गया है, आप 12 को 3 से डिवाइड करोगे, ये वाला पॉइंट कहां पे होना चाहिए था? ये पॉइंट इधर होना चाहिए था 4 के ऊपर, राइट? बिकॉज पहले इसका डिस्टेंस 4 यूनिट्स होता फिर, और फिर स्ट्रेच होके कहां चला जाता? 12 पे चला जाता। तो इसका जो स्केल फैक्टर है 3 है उस वजह से। तो 12 वाला पॉइंट जो ऊपर मैक्सिमम पॉइंट है वो किधर होना चाहिए था? वो 8 4 पे होना चाहिए था, राइट? तो मैक्सिमम पॉइंट सर्कल का यहाँ पे होना चाहिए था, इस पॉइंट के ऊपर। That means your circle would have looked something like this originally. स्ट्रेच से पहले आपका सर्कल कुछ इस तरह से होना चाहिए था। All right, what's the center of that circle? This is the center of the circle, which has coordinates 8 and 2. So that's what we write here. We say the coordinates of the center of the circle are 8 and 2 like this. ठीक है? तो आपने y एक्सिस के पर्सपेक्टिव से देखना है, x एक्सिस के पर्सपेक्टिव से देखना है, हॉरिजॉन्टल लाइन के पर्सपेक्टिव से। पहले कितना डिस्टेंस था, उसको 3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है? Now it says state the coordinates of the center of the original circle. तो आपने ट्रांसलेशन को रिवर्स करना है। ट्रांसलेशन में क्या हुआ था? 7 यूनिट्स राइट गए थे, राइट, और 3 यूनिट्स लेफ्ट गए थे। आपने उसका उल्टा करना है, वापस जाना है ना अपने ओरिजिनल सर्कल के ऊपर। तो हाउ डू यू गो बैक नाउ? उसने सेंटर का पूछा, सेंटर पहले कहां पे था? अब तो A2 पे आ गया है। अगर हम उसके कोऑर्डिनेट्स को ऐसे लिखते हैं A2, तो अब हमें क्या करना है, या उसी तरह लिख देते हैं just to make sure it does not get confusing. A2 आपके कोऑर्डिनेट्स हैं। ट्रांसलेशन क्या हुई थी? 7 यूनिट्स राइट पे चले गए थे, हमने उसको रिवर्स करना है। तो हम क्या कहेंगे? एक्स कोऑर्डिनेट में से 8 आप माइनस कर देंगे, वापस जाना ना, उसमें से माइनस कर देंगे 8। और ट्रांसलेशन में वर्टिकल ट्रांसलेशन क्या थी? वाई एक्सिस पे आपने क्या किया था? 3 यूनिट्स लेफ्ट चले गए थे। अब उसको रिवर्स करने के लिए 3 यूनिट्स राइट जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? +3 कर देंगे। एंड what does that give you? It gives you 8 minus 7, which is 1, 2 plus 3, which is 5. And that is the result that you get from this. 1 and 5, these should have been the coordinates of the original circle. ठीक है? I hope that makes sense. Anas, midpoint formula radius find करने के लिए, radius के लिए midpoint formula आप क्यों use करोगे? It's just visible from the diagram, as in it's 2 units. Why do you need to do that? ग्राफ में नजर आ रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है उसके लिए। अच्छा, let's move on. Question number 6.
It's given that alpha equals cos inverse of 8/17. Find, without using the trigonometric functions on your calculator, the exact value of 1/sin alpha plus 1/tan alpha. अच्छा, देखिए उसने क्या कहा है, आपने अल्फा की वैल्यू डेसिमल्स में नहीं निकालनी है, ठीक है? डेसिमल्स में नहीं चाहिए आपको वैल्यू। डेसिमल्स में नहीं निकाले बगैर आपको ये फिगर आउट करना है किसी तरह से। नाउ रिमेंबर, आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे, if alpha is equal to cos inverse of 8/17, what that means is cos of alpha is equal to 8/17, right? अब एक रेशो दी हो तो उससे बाकी रेशोस आप कैसे निकाल सकते हो? आप वो ट्राइंगल वाला मेथड यूज कर सकते हो, राइट? यहाँ पे हम साइड पर कर लेते हैं। Let's draw a triangle. अगर हमारे पास इस तरह की राइट एंगल ट्राइंगल होती है जिसमें ये एंगल अल्फा होता, लेट्स अज्यूम, ओके। अब इस ट्राइंगल के अंदर व्हाट वुड बी योर साइड्स? कॉज कैसे आप डिफाइन करते हो? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, राइट? एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। तो अगर एडजेसेंट इसमें 8 होता तो हाइपोटेन्यूज कितना होता? 17। नाउ यूजिंग दिस कैन वी फाइंड द थर्ड साइड? लेट्स कॉल दिस h। ये हम फाइंड कर सकते हैं। h ना कहीं हाइपोटेन्यूज से कंफ्यूज ना हो जाए। लेट्स कॉल दिस परपेंडिकुलर, p से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। हाउ डू यू फाइंड दैट? p squared plus 8 square equals 17 square. Let's see what this turns out to be. इसको exact form में रखना है, decimals में नहीं convert करना, ठीक है? Let's figure this out. 17 squared minus 8 squared, and that gives us what, 225. Square root of that is 15. p की वैल्यू हमारे पास 15 आ जाती है, so this is 15. इसका मतलब क्या हुआ? अगर cos alpha 8/17 है, what about sin alpha? Sin alpha क्या होना चाहिए? Perpendicular over hypotenuse, right? Opposite over hypotenuse. What's that value going to be? Opposite is 15, hypotenuse is 17, so that's 15/17. All right. And then what about cos alpha? Cos alpha कैसे defined होता है? Adjacent over hypotenuse, right? So that's adjacent over the hypotenuse. What's adjacent? That's a cos in fact given it, but that we don't need that. We need tan alpha. Tan alpha, what's that going to be? Opposite over adjacent. Let's evaluate that. Opposite is 15, adjacent is 8. So this is what tan is going to be, 15/8. Okay, all you have to do now is input values in that expression and we'll get a result. Let's input these values there. 1/sin alpha plus 1/tan alpha. What does that turn out to be? 1/15/17 plus 1/15/8. What do we do now? नीचे 17 ऊपर चला जाएगा. So it becomes 17/15 plus 8/15. Add them together, that gives you 25/15, and simplify this and it turns out to be 5/3. And that's what you were looking for. इसको decimals में नहीं लिखेंगे because we were looking for an exact answer. You would leave this as a fraction like this. Okay, so this is 5/3. That's the final result that we have. Okay, so this is one way of doing this. इसको आप identity से भी कर सकते थे, right? That's also fine. आप या triangles use कर, इस तरह से right angle triangle से कर सकते हैं, आप उस तरह से भी कर सकते हैं, identities use करके. Okay, let's move on. Question number 7. Okay, this paper for some reason has a low threshold. So I thought it was difficult. Maybe there's some other difficult questions later. Transformation में थोड़ा सा था, relatively high difficulty level, but apart from that, it has been straightforward. Let's see what comes ahead. Question number 7. The curve y equals f of x is such that f dash of x is equal to -3/x plus 2 whole raised to the power of 4. We have this derivative given. The tangent at a point on the curve where x equals a has gradient -16/27. We need to find the possible values of a.
ओके, सो टेंजेंट है पॉइंट ए के ऊपर, इट हैज ग्रेडियंट -16 और 27। अब देखें, इसका मतलब ये है हमें डेरिवेटिव गिवन है, f dash of x is equal to -3 over x plus 2 whole raised to power 4। ठीक है, ये हमारे पास डेरिवेटिव है। टेंजेंट का ग्रेडियंट क्या होता है? जो उस कर्व का ग्रेडियंट होता है उस पॉइंट के ऊपर। तो इस कर्व का ग्रेडियंट क्या होगा इस पॉइंट के ऊपर? That is also going to be -16 over 27. So what we can do is we can say, let's input x equals a in this. x equals a के ऊपर जो f dash of x होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? That should be -16 over 27. ठीक है, let's just input these values here. F dash of x is -16 over 27, and that equals -3 over a plus 2 whole raised to power 4. ठीक है, now let's just cross multiply a plus 2 को उधर ले जाएं। हमारे पास आता है a plus 2 whole raised to power 4. Take everything else to the other side. -3 into 27. What does that give us? 27 times 3 divided by 16. Minus or minus cancel ho jayenge. On the right side we have 81 over 16. And now what we can do is we can take fourth root on both sides. Okay, left side पे fourth root लेंगे तो वो तो a plus 2 रहेगा। राइट साइड पे लेंगे तो आप देख लें कैलकुलेटर में 81 over 16 का फोर्थ रूट ले रहे हैं। ठीक है, कैलकुलेटर में कुछ बटन होता है स्क्वायर रूट बटन के ऊपर, नहीं स्क्वायर रूट नहीं ऊपर तो नहीं है, ये आपके पास अलग से आ रहा होगा कहीं पे। या सो x रेज़ टू पावर समथिंग के ऊपर आपके पास ना वो एक ब्लैंक होता है जिसके ऊपर आप कुछ भी रूट ले सकते हैं। Another possibility is आप पावर 1/4 कर दें, that's also fine, right? That's probably easier to use। 81 over 16 पावर में आप बेशक 0.25 डाल दें। Okay, so you can do it however you want। This turns out to be 1.5 या 1/2। But remember, whenever you take even roots, square root, fourth root, sixth root, we put plus minus. So this is plus minus 3/2। We get two equations from this. Either a plus 2 equals 3/2 or a plus 2 equals -3/2। इनसे दो values of a आ जाएंगे आपके पास। 3/2 minus 2, that gives you -1/2, and -3/2 minus 2, that is going to give you -7/2. And these are the two values for a that we were looking for। Okay, all right, let's move on। TBS, we don't do these papers because वही questions दोबारा आ जाएंगे। That's not what happens, but we do these papers to understand how to approach different types of problems। And it turns out अगर आप recent papers देखेंगे उनका pattern काफी similar है। They're very similar questions that come, similar type of questions that come mostly, right? But of course every paper is going to have 2-3 questions जो थोड़े से different होंगे, उनका आपको वहीं पे बैठ के सोचना पड़ेगा। But how do you learn how to think? By doing as much practice as you can। So this is just from that perspective that we're doing as much practice as we possibly can। That would help us on the exam day as well। Okay, but of course exact same चीज तो कभी नहीं आती और आनी भी नहीं चाहिए, because math is supposed to make you think, not just make you learn things by heart। So अगर आप ये thinking process यहाँ पे learn कर रहे हैं, that should help you in the exam as well। Okay, let's look at this part B। Find f of x given that the curve passes through the point -1 and 5। Okay, आपके पास derivative given है। What's the derivative? The derivative is -3 over this। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, -3 into x plus 4 whole raised to power -2। इसको power form में ऐसे लिख सकते हैं। No, the other way around। This is x plus 2 whole raised to power -4। ठीक है, इससे आपको ओरिजिनल कर्व फाइंड करनी है। क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर लें। इंटीग्रेट करेंगे तो उसमें प्लस सी आ रहा होगा, और वो सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए फिर हम ये पॉइंट इनपुट कर देंगे और सी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, लेट्स डू दैट। लेट्स इंटीग्रेट इट फर्स्ट ऑफ ऑल। -3 remains as it is। We add 1 to the power x plus 2 whole raised to power -4 plus 1। That's -3 divided by -3। न्यू पावर से आपने डिवाइड कर दिया, जो अंदर वाला पार्ट है उसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर दिया, which is 1। -3 and -3 get cancelled, and it turns out we have
1/x+2 whole cube left. ठीक है, but remember whenever we integrate something we have a plus c there. Do not forget that. अब क्या करेंगे, अब हम ये वैल्यू को ये पॉइंट इनपुट कर देंगे. So we put -1 and 5. x की जगह पे -1 डाल दें और f of x या y की जगह पे आप 5 डाल दें. So it gives you 5 equal to 1/-1 + 2 whole raised to power 3 plus c. And c turns out to be 5 from this. तो आपकी equation of curve क्या हो जाएगी फिर? f of x therefore turns out to be 1/x+2 whole cube plus 5. Oh, I'm sorry, this is not correct. यहाँ पे 0 नहीं आ रहा था. यहाँ पे आपके पास so that was a pretty stupid error. What I did here was I took that as 0. Acha, so this is not correct. 1/-1 आ रहा है, so this is actually -1 here. So, or yeah, +1, sorry. Denominator not +1 है, 1 का cube, that's 1, so 1/1 is 1. So we have c + 1 equal to 5. The value of c actually turns out to be 4 here. So f of x turns out to be 1/x+2 whole cube plus 4. Okay, and that's what your final function turns out to be. ठीक है, ये आपके पास f of x आ गया. Let's move on. That's the second part of this question. That's what we had to do here. Question number 8. Let's move on to this. It says the diagram shows two identical circles, that means they're exactly the same with the same radius, intersecting at points A and B. You can see that in the diagram with centers P and Q. The radius of each circle is R, and the distance PQ is 5/3R. What we need to do is we need to find the perimeter of the shaded region in terms of R. Okay, shaded region ka perimeter. Perimeter is the length of the boundary of the shape. ये आपकी boundary है shape की, right? इसकी total length निकालनी है. These are arc lengths, right? दोनों arc lengths निकालें, उनको add कर दें. ये कोई भी एक निकाल लें, so 2 से multiply कर दें because they're both the same. Now, how do you find arc length? Arc length का formula हमारे पास क्या होता है? It's S equals R theta, right? Arc length equals radius into angle. Radius हमारे पास है in terms of R निकालना, right? The problem is we need to find the angle theta somehow. How do you find angle theta? That's what the problem is. Now, what we can do for that is we can make some triangle here. If we make a triangle like this, for instance, we have PBQ triangle, right? अब इस triangle में आपको पता है ये length भी आ रहा है और ये length भी आ रहा है, because both radii are equal. They're both R. So it's an isosceles triangle, right? Now, if it's an isosceles triangle, we know 3 lengths. आपको कोई भी एक angle निकालना है अगर, for example, if you're looking for this particular angle, let's call this angle alpha. ये आप निकाल सकते हैं either using cosine rule, that's one possibility, or what you can do is you can break this triangle down into 2 parts. Remember, it's an isosceles triangle. Isosceles triangle में अगर हम इसको इस तरह से दरमियान से कट करते हैं तो क्या होता है? We get a right angle triangle such that ये जो PQ length है, this will get divided into 2 equal parts. If the whole length was 5/3R, the length of one side is going to be half of that. So 5/3 का half कितना होता है? 5/6. So this length is going to be 5/6 times R. Using this, we can find the value of alpha. ठीक है? How do you do that? Alpha के perspective से 5/6R वाली side जो है, that is adjacent. R is hypotenuse. Adjacent or hypotenuse में कौन सी ratio होती है? We have cos. So we can say cos of alpha equals adjacent, which is 5/6 times R, whole divided by hypotenuse, which is R. R and R get cancelled. What are we left with? 5/6. That is what cos alpha turns out to be. ठीक है? Cos alpha की वैल्यू आ गई हमारे पास. अब हम क्या कर सकते हैं? हम alpha फाइंड कर सकते हैं.
ठीक है, what is alpha going to be? Alpha is going to be cos inverse of 5/6. ठीक है, let's figure that out. Cos inverse of 5/6. Remember, your calculator has to be in radian mode because आपने s equals r theta formula को use करना है और हम angles यहाँ पे radians में रखते हैं. So if your calculator is in degrees mode, make sure to convert that first. So cos inverse of 5 divided by 6, and that is giving me 0.585685. So you can say 5, 7. At least 4 significant figures आपने रखने हैं, otherwise आपके final answer सही नहीं आ रहे होंगे. ठीक है. This is the value of alpha that we have. ये angle आ गया आपके पास. अब arc length आपको निकालनी है. आपको एक angle पता चल गया, ये angle alpha है. But remember, ये arc आपको ये पूरी निकालनी है. So let's say we're looking for this complete arc. दूसरी साइड पे देख लें, यहाँ पे clutter बहुत हो गया. Right side पे हम left side देखते हैं. हमें ये half angle पता है. This is alpha. We need the complete angle. Let's call this angle theta. What is theta going to be? Theta is going to be 2 times this, right? So theta is going to be 2 times alpha, which is 2 into 0.5857. तो जो भी आपकी calculator value आ रही थी पहले उसको 2 से multiply कर दें. And that gives us 1.1714. This is the value of theta that I'm getting. ठीक है, अब एक आर्क की लेंथ निकाल लें, कोई भी एक आर्क, लेट्स से आर्क AB, दोनों आर्क AB हैं वैसे तो, एक की हम लेंथ निकाल लें पहले. R into theta. Radius is what? Radius is R into angle, which is 1.1714. What do we get from that? 1.1714 into R, right? What about the perimeter now? Perimeter is 2 arc lengths. इस arc length को 2 से multiply कर देंगे, you'll get the complete perimeter. So 2 into 1.1714 R, and that's going to give you the result. Let's see what that turns out to be. This multiplied by 2, and that's giving me 2.343 R. And that is what your final answer turns out to be here. 2.343 R. Okay, that's the result that we get from this. Let's move on. Now it says find the area of the shaded region in terms of R. Okay, so now we need this shaded region. How do you find the shaded region? आपने R के terms में पहले निकाला और आपने अभी भी R के terms में ही shaded region निकालना है. How do you find that? Now, how would you describe this area first of all? What you can do is you can actually find the area of half of this part, half of the shaded region, and that will be this part. अगर आप इतने part का निकाल लें, right? Now let me just erase some of this ताकि clutter थोड़ा सा कम हो जाए. और वो अपने notes में भी चाहिए होगा तो इसको मैं actually just make this here. हमारे पास इस तरह की situation है कि एक डायग्राम है जिसमें sorry about that. We have something like this. एक पार्ट में ये आ रहा है, ठीक है, और दूसरे पार्ट में आपके पास फिर इस तरह से भी आ रहा है. आपको ये शेडेड पार्ट चाहिए. हम क्या करते हैं, हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 2 पार्ट्स में. हम कहते हैं लेट्स डिवाइड इट एज अ सेगमेंट हियर. हम ये वाला पार्ट फाइंड कर लेते हैं. तो टोटल जो शेडेड रीजन है, वो आपके पास कैसे आ सकता है? Zarif, well, you can get anything that you can do using the formulas that you have. You can figure this out. इसमें कोई मसला नहीं है. Anas, 3 significant figures. उसने क्वेश्चन में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी हुई है तो 3 से ज्यादा हो सकते हैं. That's okay. अच्छा. अब ये शेडेड रीजन में हम क्या कर सकते हैं? हम कहते हैं इसको हाफ में डिवाइड कर लें. अब ये वाला पार्ट एक सेगमेंट है. एक सेगमेंट के एरिया हम निकाल लेते हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड विल गेट आवर रिजल्ट. ठीक है, लेट्स डू दैट. एक सेगमेंट का एरिया कैसे आएगा? रेडियस आर, वी आल्सो नो द एंगल. द एंगल वाज
1.1714. This angle is 1.1714. ठीक है? So we have this information. Radius भी है, angle भी है, segment के area निकालना है. Segment के area कैसे निकालते हैं? Sector में से triangle minus कर दें. Let's find that. Area of the segment. Sector के area, that's half r square theta. Subtract from that the area of the triangle, half AB sin C use कर लें. दोनों sides r हैं, so that's r into r, that becomes r squared into sine of the angle, sine of theta. इसके अंदर values input कर दें. Half r square आप इसे common ले लें. अंदर आपके पास क्या बचा? Theta minus sine theta. That's 1.1714 minus sine of 1.1714. ये evaluate कर लें, देखें आपके पास क्या आता है. 1.1714 minus sine of 1.1714 divided by 2, and that turns out to be 0.125. 0.125 r squared. ज़्यादा decimal place in fact लिखना चाहिए हमें. 125 आगे 1 आ रहा है, ठीक है? 1251 r squared. This is the area of the segment. But we were looking for that complete shaded area. तो क्या करेंगे? इस segment के area को 2 से multiply कर देंगे. तो उससे हमारे पास वो total shaded area आ जाएगा. Let's see what that turns out to be. 2 into 0.1251 r squared, and that turns out to be 0.2501. 0 तक लिखते हैं या आगे लिखते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन एटलीस्ट 0 तक आपको लिखना है. 0.250 r squared. That is the final result that we get from this. This is the shaded area. Okay, let's move on. Question number 9. How many questions do we have in total? 11. Okay, let's do question number 9 now. It says the first term of a geometric progression is 216 and the fourth term is 64. Find the sum to infinity of the progression. Okay, so it's a GP. GP, maybe know the first term. The first term is 216. We know the fourth term. The fourth term is 64. Sum to infinity निकालना है, उसके लिए आपको क्या चाहिए? A over 1 minus r formula होता है. A तो पता है, r नहीं पता. वो कैसे निकालेंगे? आप term formula लिख लें यहाँ पे. Term formula is Tn equals ar raised to power n minus 1. And the sum to infinity formula, therefore, after that is a over 1 minus r. ठीक है? अच्छा, ये वाला formula use करते हैं. इसमें fourth term अगर आपने find करनी हो, तो क्या होएगा? T4 is going to be a, which is 216, into r, which is unknown, raised to power 4 minus 1, which is 3. T4 हमें पता है इसकी क्या value है? 64. इसको यहाँ पे input कर दें. 64 equals 216 r cube. Let's figure out what r cube turns out to be. 64 divided by 216, that's giving me 8 over 27. Take cube root of that, and that would give you 2 over 3 as the result. ठीक है? रेशियो आ गई 2 over 3. इसको फॉर्मूला में इनपुट कर दें जाके. सम टू इन्फिनिटी आपके पास क्या आ जाता है? a is 216 divided by 1 minus r, that's 1 minus 2 over 3. 1 over 3 नीचे आएगा, 3 ऊपर जाके multiply हो जाएगा. The sum to infinity is therefore going to turn out to be 216 multiplied by 3, and that is 648. And that's your final answer here. Okay, that's what we were looking for. Let's move on. Part B of this. It says the second term of the GP is equal to the second term of an AP. The third term of the GP is equal to the fifth term of the same AP. Find the sum of the first 20 terms of the arithmetic progression. 21 terms. Sum formula के लिए आपको क्या चाहिए? AP का first term चाहिए और आपको difference चाहिए और number of terms आपको पता है. आपको first term चाहिए उसकी और 21st term चाहिए. Now, how do you figure that out? Let's write these things down. First of all, it's the क्या information दी हुई है. We have some information about the GP. GP की terms हमारे पास क्या है? First term was 216. Now we know the ratio. What we can do is we can find the rest of the terms if we want.
यहाँ पे लिख लेते हैं फिफ्थ टर्म तक, थर्ड टर्म तक जाने ना जीपी की। हमें कौन कौन सी टर्म चाहिए? सेकंड टर्म चाहिए और थर्ड टर्म चाहिए। जीपी की 2 टर्म चाहिए। फर्स्ट टर्म is 216. Let's find the second and also the third term of the GP. GP की ये 2 टर्म्स हम पहले फिगर आउट कर लेते हैं। अच्छा, how do you find T2 and T3? Remember the formula that we have for that? Term formula हमारे पास है AR raised to power n minus 1. We know A is 216, right? And ratio is 2/3. We just found that here. तो अब क्या करें? T2 फाइंड कर लें इसका पहले। T2 कैसे आएगा? A 216 into 2/3. इसको 2/3 से मल्टीप्लाई कर दें, देखो बस क्या होता है। 216 into 2 divided by 3, that's giving me 144. तो GP के सेकंड टर्म आती है 144। तो इसको दोबारा 2/3 से मल्टीप्लाई कर दें, and that gives you 96. These are the first 3 terms of the GP that we want. Okay, ये फिगर आउट कर ली। अब देखते हैं AP। AP के साथ क्या कनेक्शन है इसका? AP की फर्स्ट टर्म हमें नहीं पता, वो हमें फाइंड करनी है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग दिस हियर। और हमें कौन सी टर्म चाहिए एपी की? सेकंड टर्म ऑफ द जीपी इज इक्वल टू द सेकंड टर्म ऑफ द एपी। तो एपी की सेकंड टर्म चाहिए एक, और फिर उसने कहा थर्ड टर्म ऑफ द जीपी इज इक्वल टू द फिफ्थ टर्म ऑफ द एपी। तो एपी की हमें एक फिफ्थ टर्म चाहिए, ठीक है। नाउ व्हाट्स द फर्स्ट टर्म? इसको हम ए कह लेते हैं। वी डोंट नो व्हाट दैट इज, वी हैव टू फिगर दैट आउट। सेकंड टर्म, सेकंड टर्म आपके पास एपी की क्या होगी हमें नहीं पता। टर्म फॉर्मूला आपके पास क्या है? लेट्स राइट दैट डाउन। Tn equals a plus n minus 1 into d. This is the term formula for an AP. Second term कैसे लिख सकते हैं आप? A plus n minus 1, that means 2 minus 1, that's 1. So it's 1 into d, a plus d. That's the second term. Similarly, you can write the fifth term. Fifth term is going to be a plus 4 times d. Right? Acha. Now, just to make sure, these are not equal. ये equal नहीं है. Keep that in mind. These are different. So let me actually not confuse you with that. यहाँ पे नहीं लगता है, ठीक है, ताकि वो equal ना कर दें आप उसको। Second term of the GP is equal to second term of the AP. ये दोनों equal है. And the third term of the GP is equal to the fifth term of the AP. इससे आपके पास क्या होएगा? 2 equations आ जाएंगी. So we have A plus D equal to 144. And A plus 4D equal to 96. These are 2 equations that we have. We can solve them simultaneously and find the values for A and D from this. Let's do that. दोनों में A को subject बना ले. That gives you 144 minus D here and 96 minus 4D here. Equate both of them. 144 minus D equals 96 minus 4D. 4D comes to the left side, it becomes 3D equals 96 minus 144. That's giving me minus 48. Difference आपके पास इससे आ जाएगा minus 48 over 3, that's minus 16. D की value आ गई. Put that in any one of those 2 equations to find the corresponding value for A as well. A turns out to be 144 minus D, so that's minus 16. And A is equal to 160. Now just use the sum formula to find the sum of the first 21 terms. Sum formula क्या होता है? Formula sheet में लिखा होता है. This is one form of that. Half n into 2a plus n minus 1 times the difference. AP है तो AP का formula use करना है. Don't do a careless error here. आपको चाहिए sum of the first 21 terms. So n की value 21 equals, no, in fact, multiplied by 2 into a is 160. Plus n, which is 21 minus 1 into d, which is minus 16. ये पूरा evaluate कर लें, आपके पास sum आ जाएगा. ठीक है, so 320 plus on that minus 20 into 16 into 21 divided by 2, and that's giving me 0.
Okay, let me just confirm that. 320 minus 20 into 16 into 21 over 2. Okay, so the sum of these 21 terms turns out to be 0. All right. Now the reason for that is because कुछ terms इसमें positive होंगी. First term इसमें 160 से start किया है, और फिर आपका difference -16 है, तो end पे जब कुछ terms negative आ जाएंगी, तो फिर आप जब उनका sum find करते हो first 21 terms का, it turns out कि वो positive और negative terms एक दूसरे को cancel out कर देती हैं और आपके पास 0 sum आ जाता है. ठीक है, and that's your final answer here. Let's move on. Question number 10. So we have the diagram that shows the circle x squared plus y squared equals 2 and the straight line y equals 2x minus 1 intersecting at the points A and B. The point D on the x-axis is such that AD is perpendicular to the x-axis. Okay, find the coordinates of the point A. All right, we have the equation of the circle given. X squared plus y squared equals 2. इसको अगर आप compare करें standard form के साथ, the standard form is x minus a whole squared plus y minus b whole squared equals r squared, right? तो उससे आपको पता चलेगा इसका center क्या है. Center is just 0 and 0 origin, because a और b की जगह पे कुछ आ ही नहीं रहा आपके पास. यहाँ पे origin is the center of the circle. ठीक है. What about the radius? Radius is going to be square root of 2. R square corresponds to 2. So R is equal to 2. Radius इसका क्या है? Square root of 2 है. यहाँ पे लिख लेते हैं radius is square root of 2. अच्छा. Now we have to find the points of A somehow. Point A is right here. And it's such that it lies on the line y equals 2x minus 1. ठीक है. तो इसमें तो आपको A के coordinates निकालने हैं. आपके पास line की equation है, circle की equation है. A is the point of intersection of the line and the circle. The point of intersection निकालना है आपको. All you have to do is just solve these two simultaneously. ठीक है. This information might be helpful later, radius और वो, but अभी के लिए first part में तो सिर्फ आपके A के coordinates मांगे हैं, उनको बस simultaneously solve कर लेते हैं. We have x squared plus y squared equals 2. We have the equation of the line given as well. That's y equals 2x minus 1. What do we do with this? Y equals 2x minus 1. इसको first equation में input कर दें. ठीक है. जो linear equation है वो quadratic में जाके input कर दें. So what does that give you? X squared plus y की जगह पे we have 2x minus 1. 2x minus 1 whole squared equals 2. Let's solve this equation. It becomes x squared plus, this is a minus b whole squared, which is a squared minus 2ab plus b squared. So this becomes 2x whole squared minus 2 into 2x, which is 4x plus 1 equals 2. X squared plus 4x squared minus 4x plus 1 minus 2 equals 0. And we get a quadratic equation from this, which is x squared plus 4x squared, which is 5x squared, minus 4x minus 1 equals 0. Can we factorize this? Can we break the middle term? 5 minus करके हमारे पास 4 आ सकता है. Yeah. So we can say 5x squared minus 5x plus x minus 1 equals 0. We get two factors from this, 5x plus 1 and x minus 1. And we get x equals minus 1 over 5 from this, or x equals 1. Now remember, we're looking for point A here. A का x coordinate negative तो नहीं हो सकता, right side के ऊपर है वो, तो हम कह सकते हैं ये वाला point हम ignore कर सकते हैं. This is not A. That's not what we're looking for. ये दूसरा point of intersection है, point B. तो वो अभी हमें नहीं चाहिए. In fact, second part में शायद चाहिए हो. Maybe बाद में देखते हैं. But this is not A. We don't need that right now. A point का x coordinate 1 होना चाहिए. इसको जाके उसमें input कर दें दूसरे equation में. इससे आपको corresponding y coordinate मिल जाएगा. Y equals 2 into 1 minus 1. And the y coordinate turns out to be 1 as well. So that means the coordinates of the point A are 1 and 1. Okay, and that is what we were looking for. We have the point A here. Okay, so we have found that point. Let's look at the next part now. The next part says find the volume of revolution. So this is integration, right?
Find the volume of revolution when the shaded region is rotated 360 degrees about the x-axis. x-axis के about rotation है. Remember, volume में जिसके about rotation होती है आपको वही formula use करना होता है. इसमें आप area में आप कभी-कभी दोनों कर सकते हैं use, यहाँ पे दूसरा नहीं कर सकते. About x-axis के rotation का formula हमारे पास क्या है? Vx is equal to pi into integral of y square with respect to x. This is what we need to be using here. Okay, give your answer in this form. Exact form में answer देना है आपको इसी form में आ जाएगा. किसी तरह से हम देखते हैं. Where A, B, C, and D are all integers. We'll figure that out. Now let's go to the diagram and see कि shaded region हमारे पास है क्या. Okay, so this is the shaded region. We need to see कि इसका volume of revolution हमारे पास क्या होता है. अच्छा, अब how would we describe this region first of all? This is the region between this curve and the x-axis from the point D to this point here. अब सबसे पहला काम तो यह है कि आपने लिमिट्स फाइंड करनी है. What are the limits? आपको A के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए हैं. A के कोऑर्डिनेट्स 1 and 1 है. इसका मतलब है पॉइंट D का कोऑर्डिनेट भी 1 होएगा. This is supposed to be 1. What about this point? This is the x-intercept of the circle. पहले तो ये पॉइंट फाइंड कर लें. Let's call this point something. Let's call this point E. इसने E तो नहीं यहाँ पे यूज किया कहीं पे. Let's call this E. अच्छा, अब E के कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे? We have the equation of the circle, that's x square plus y square equals 2, right? Yeah. What we do is we say let's input y equal to 0 on this. When we do that, we get x square equals 2 and x equals square root of 2 plus minus square root of 2. लेकिन हमें पता है हमें राइट साइड वाला पॉइंट चाहिए, तो x की वैल्यू जो हमें यहाँ पे मिलेगी that is plus square root of 2. E के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? square root of 2 and 1. Now, in fact, it turns out हमें करने की जरूरत नहीं थी. वैसे हमें पता है रेडियस स्क्वायर रूट ऑफ 2 हमने पहले इवैल्यूएट किया था, तो E के कोऑर्डिनेट्स E पॉइंट इन फैक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 2 पे ही होना चाहिए था. We should realize that without that, but that's what we have. This is square root of 2. हमें वो करने की भी जरूरत नहीं थी. हमें पता है रेडियस स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, सेंटर इज ओरिजिन, तो वो पॉइंट स्क्वायर रूट ऑफ 2 ही होना चाहिए. ओके, अच्छा, अब हम क्या करते हैं? इसको मैं रेज कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं थी. इसका बगैर भी आप डायरेक्टली फिगर आउट कर सकते हैं. लिमिट्स आ गई हमारे पास. ठीक है, अब हमें क्या करना है? y स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाना है. This is what the equation is for the curve. X square plus y square equals 2. इस इक्वेशन में इस फॉर्मूला में इनपुट करना है, तो y square सब्जेक्ट चाहिए यहाँ पे. ठीक है, Gautam, what you can do is you can have a look at my YouTube channel's main page. उसके ऊपर लिंक आपको मिल जाएगा, Instagram का भी, I think WhatsApp का भी. Okay, अच्छा. X square plus y square equals 2. हम क्या करते हैं? Y square इसमें सब्जेक्ट बना लेते हैं. That gives you y square equals 2 minus x square. अच्छा, अब y square की जगह आपने सिर्फ ये इनपुट कर देना 2 minus x square, right? Let's do that. यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मूला है, इंटीग्रल y square which is 2 minus x square whole raised to power, not fact इसकी पावर तो नहीं करनी है, ऑलरेडी वो है आपके पास. y square है, ये पूरे को आपने इंटीग्रेट करना है with respect to x and the limits are going to be from 1 to square root of 2. ठीक है, these are the limits, 1 to square root of 2 and we have pi outside. ये इंटीग्रेट करना है. Now how do we integrate this? pi बाहर वैसे रहेगा. 2 का इंटीग्रल is 2x, x square का इंटीग्रल is x cube over 3. We input the limits from 1 to square root of 2. ये फॉर्म आपको सारी वर्किंग दिखानी होगी. एग्जैक्ट आंसर में आपको हमेशा वर्किंग दिखानी होती है. वैसे भी आपको वैल्यूज इनपुट करके तो हमेशा दिखानी होती है. So we have 2 into square root of 2 minus square root of 2 whole cube divided by 3 minus 2 into 1 minus 1 cube over 3. ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे. 2 into square root of 2, रिमेंबर ये पाई तो बाहर है, उसके बाद में देख लेंगे. अंदर हमारे पास क्या आ रहा है? 2 square root of 2
माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल क्यूब, ये आप कैलकुलेटर में डालें सीधा, ये आपको देगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 3, ठीक है, माइनस 2 प्लस 1 ओवर 3। ओके, ये हमारे पास आ गया। अब उसने क्या कहा है, आपको ये फॉर्म चाहिए जो उसने ऊपर दी हुई है, दिस होल थिंग हैज अ पाई आउटसाइड एज वेल। आपको उस फॉर्म में इसको लेके जाना है पहले तो। अब ये कैसे लेके जाएंगे, पाई तो ऊपर आ गया कॉमन, दैट्स ओके, दे ऑल्सो वांट समथिंग कॉमन इन द डिनोमिनेटर, सो 3 जो नीचे है उसको कॉमन ले लेते हैं बाहर। अगर हम 3 को बाहर कॉमन लेते हैं तो हमारे पास अंदर क्या आता है, पाई ओवर 3 इनसाइड we're left with, इसको क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट, सो इट बिकम्स 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस, और another way of thinking about this could be कि आप अंदर ही ना पहले सिंप्लीफाई करना है, दिस इज कॉम्प्लिकेटेड, आप ये भी कर सकते हैं, आप अंदर एलसीएम ले लें, ठीक है, अंदर पहले एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 6 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 2 माइनस 2 प्लस 1 ओवर 3, या पहले 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 6 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 3, कैन वी डू दैट, राइट। अब नीचे वाले 3 को बाहर लिख दें, पाई ओवर 3 whole multiplied by numerator को simplify करें, that gives you 4 square root of 2 minus 5, and that is the result that we were looking for here. Okay, that's what we wanted. आपके पास ये वाली फॉर्म आ गई है, ठीक है, pi over a whole multiplied by 4 square root of 2 minus 5, and that's your final result. That is what we were looking for. Okay, इसको exact form में रहने देना, इसको simplify नहीं करना, इसको decimals में नहीं लगना। Yes, exactly. That's exactly what we're doing. साथ y square हमारे पास था पहले, उसको सब्जेक्ट बनाया, उसको जाके बस आपने इस फॉर्मूला में इनपुट किया, वो ऑलरेडी y square था, तो उसको स्क्वायर करने की तो जरूरत नहीं थी आपको, वो एज इट इज इनपुट किया, उसके अंदर लिमिट्स इनपुट कर दी, एंड यू गॉट द रिजल्ट। ओके, अच्छा, नाउ इट सेज फाइंड द एग्जैक्ट एक्सप्रेशन फॉर द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। Perimeter of the shaded region. Acha, let's look at this now. Zarif, finding angle from two curves, I don't know what you mean by that. I think angles from angle between two lines की बात करें आप, angle between two lines, वो आपको coordinate geometry में मिल जाएगा, P1 के crash course में angle between two lines वाली वीडियो देख रहे हैं। अच्छा, coordinate geometry के अंदर होगा, उसका कोई पार्ट होगा angle between two lines. The diagram shows, अच्छा नहीं आपने कर लिया, perimeter इसका फाइंड करना है, perimeter कैसे फाइंड करेंगे, let's look at this shaded region. ये वर्टिकल लेंथ है, ये आर्क लेंथ है, और ये हॉरिजॉन्टल लेंथ है, इन तीनों लेंथ्स को आपने ऐड करना है, दैट्स ऑल दैट यू हैव टू डू, ठीक है। नाउ हाउ कैन वी डू दैट, लेट्स फिगर दिस आउट। अब वर्टिकल लेंथ क्या हमें पता है इसकी, वर्टिकल लेंथ तो हमें पता है, वर्टिकल लेंथ इज 1 unit because the y coordinate of a is 1, so the vertical length is 1, एक साइड हमें पता है इसकी। Can you find D and this length? इसको हमने नाम दिया था, इसको हम E कह लेते हैं इस पॉइंट को, this is E. We can find this length as well, DE, square root of 2 में से 1 minus कर दें, right? We know this length as well. The problem is only the arc length there. Arc length AE, ये length find करनी है, arc length find करनी है, it's a circle, circle की arc length आप find कर सकते हैं, we have a formula for that, that's S equals R theta, right? रेडियस पता है आपको, स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, एंगल नहीं पता, दैट्स द प्रॉब्लम, वी नीड टू फाइंड द एंगल समहाउ। एंगल कैसे फिगर आउट करें, वी कैन मेक अ राइट एंगल ट्रायंगल हियर दैट लुक्स लाइक दिस। व्हाट डू वी नो अबाउट दिस राइट एंगल ट्रायंगल, ये AD, ये वाली ट्रायंगल यूज कर रहे हैं, वी नो दैट द हाइपोटेन्यूज इज स्क्वायर रूट ऑफ 2, why, because that's the radius, right? Length OD is 1 unit. We know that the x coordinate of D is 1, so that's 1 unit. ये angle theta ये हम find कर सकते हैं, ratio use कर लें, we have adjacent and hypotenuse, base and hypotenuse, cos use कर लें, we can say cos theta is 1 over square root of 2. Let's do that. यहाँ पर working show कर देते हैं, cos theta is 1 over square root of 2. अब इसका exact आपको angle पता है, क्या होता है, कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं, दैट्स ओके, कैलकुलेटर में आप डालेंगे, आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा उससे, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू यूज करनी है,
cos inverse of 1 divided by square root of 2 and that gives you pi over 4. Theta is pi over 4. ठीक है, ये आ गया आपके पास. इससे आपकी आर्क लेंथ आ जाएगी. आर्क लेंथ निकाल लेते हैं. आर्क DE. This is the arc length that we're looking for. AE. Arc AE. Arc AE निकाल लें. That's R into theta. Radius क्या है? Square root of 2. Angle is pi over 4. So it's square root of 2 into pi over 4. What's the perimeter then? तीनों sides को add कर दें. AD is 1. Horizontal length is square root of 2 minus 1 or parabolic length. Let's do that. So we have 1 over 1 vertical length plus square root of 2 minus 1 जो horizontal length थी plus the arc length which is square root of 2 over 4 times pi. आपको exact answer चाहिए तो उसको exact form में रहने देना है. ये आपके पास आ जाएगा square root of 2 plus square root of 2 over 4 times pi. ठीक है, इसको यहाँ पे simplify करके लिख देते हैं. That's square root of 2 plus square root of 2 over 4 times pi. And that's your final answer here. ठीक है, exact form में decimals में नहीं convert करना है इसको. Let's move on. Question number 11. So now we have the coordinates of points A, B, and C. They are given where P is a constant. Given that AC and BC are equal in length, find the value of the fraction P. Okay, P is a fraction, तो आपने fraction में निकालना है, इसको decimals में नहीं convert करना. Okay. Now before we start this question, just a reminder: make sure that you like the stream if you haven't already, because it helps with engagement for other people later जो YouTube search करते हैं. अगर आप इस पे likes होते हैं, तो फिर it's more likely to be recommended by YouTube. Also have a look at the description. You'll find a lot of other helpful content. I've completed my complete syllabus for paper 1, paper 3, M1 and S1, including topical past paper practice. And you'll also find the link to some quick revision videos, which a lot of people find helpful every year before their exams, for last minute revision before their exams. And also I've solved all the papers from 2021, 2022, and 2023 that we have until now, except the October, November ones, wo bhi main kar raha hu. You can find them in the link below as well. The playlist is yearly past papers. Okay, wo bhi aapko description mein niche mil jayegi. You can find all of those solutions there. Let's start with this one now. Question number 11. The coordinates of point A, B, and C are given. हमें पता है कि AC और BC के lengths equal हैं. Let's just equate their lengths. AC and AB. Remember the formula that we have for distance? It's like this. x2 minus x1 whole squared plus y2 minus y1 whole squared. This is the formula. This is the distance formula that we have. Okay. Now let's use this distance formula to find the value of P. Acha. Square root of distance AC. अभी हम A और C को देख रहे हैं. ये point और ये point. So we can say 2P minus 5, x2 minus x1, plus P minus minus 2, that's going to become P plus 2 whole squared. This पूरे का square root is equal to the length BC. So now we're talking about B and C. That's going to be square root of 2P minus 10 whole squared plus P minus 3 whole squared, or it's पूरे का square root. The square roots are going to get cancelled because आप दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएंगे. तो आपके पास देखें क्या आता है. 2p minus 5 whole squared plus p plus 2 whole squared equals 2p minus 10 whole squared plus p minus 3 whole squared. And now you can solve these, solve this equation, find the value of p that you get from this. Okay, so this is 4p squared minus 2 into 2p into 5. What is that going to be? That's 20p plus 25 plus p squared plus 4p plus 4. Then on the right side, you have 2p whole squared. That's 4p squared minus 2 into 2 into 10. That is 40 minus 40p plus 100 plus p squared minus 6p plus 9. ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लें. देखें आपके पास क्या आता है.
4p² and 4p² and p² and p², they get cancelled. तो square वाली terms खत्म हो गई सारी, तो कोई quadratic नहीं रही, right? 5p² right पे, 5p² left पे, तो खत्म हो गया. Minus 20p plus 4p, what does that give us? Minus 16p plus 29 on the left side. On the right side, we have minus 40p and minus 6p. That's minus 46p plus 100 plus 9. That's 109. And we have 30p equal to 109 minus 29. That is going to be 80. And the value of p turns out to be 80 over 30, which is 8 over 3. That's the value of p that we were looking for. And we have found that here. Okay. Acha. That's the first part. Let's move on to the next one. Abdul Muqeed, M1 will be somewhere around 8 p.m. inshallah. Sometime around 8 p.m. Adam Martin, I worksheets, topical worksheets में ज़्यादा वही use कर रहा होता हूँ. So Zen वाली worksheets हैं जो 2015 तक है. If you want recent worksheets, Papa Cambridge जो website है past papers के लिए, they've uploaded some topical worksheets. In fact, all of the topical worksheets for maths until I think 2021. You should find them helpful as well. Okay, acha. Let's start with this. It's now given instead that AC is perpendicular to BC and that P is an integer. Find the value of P. Acha. It is now given instead. Okay. Acha, this wording is very important. It's now given instead, which means what you had given in the previous part is no longer relevant, right? AB and AC and BC are not equal anymore. आपने वो information नहीं use करनी है. They're not equal. Okay. उसने कहा AC is perpendicular to BC and that P is an integer. Find the value of P. Okay. AC and BC are perpendicular. Okay. इसका मतलब क्या हुआ? उनके जो gradients हैं, उनका product is going to be equal to -1. Right? या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आप एक find करेंगे gradient, दूसरा gradient उसका negative reciprocal होएगा. Do it either way. दोनों gradients find कर लें पहले. Let's find the gradient AC first of all. Let me write down those points here first. A point क्या था? 5 minus 2 and 10, 3 is B. 5 minus 2. B is 10 and 3. And then you have 2P and P. 2P and P. AC का gradient निकाल लेते हैं. That's P minus minus 2. That's P plus 2 divided by 2P minus 5. That's the gradient of AC. Find the gradient of BC as well. That turns out to be P minus 3 divided by 2P minus 10. ठीक है. ये दो gradients हैं, एक दूसरे के negative reciprocal होने चाहिए. ठीक है. तो हम क्या करेंगे? हम या तो ये कर सकते हैं कि एक का negative reciprocal ले लें और उसको दूसरे से equate कर दें. The other idea is you use that equation that you have, M1 into M2. This should equal -1. ठीक है. इन दोनों को multiply करें, -1 से equate कर दें. So P plus 2 over 2P minus 1, this should equal -5, sorry. This should equal P minus 3 divided by 2P minus 10. And this equals -1. ठीक है. Now just do this multiplication. अच्छा, क्या कर सकते हैं? हम कहते हैं let's simplify this. यहीं पर simplify कर लें, denominator को पहले right side पे ले जाएं, उसके बाद simplify कर लें. If we multiply the numerators, that gives us P squared plus 2P minus 3P, that's going to be minus P minus 6. In the denominator, we have 2P into 2P, that's 4P squared, minus 10P and minus 20P, that's going to be minus 30P plus 50. Okay, this side -1 hai. This goes to the other side, gets multiplied there, and we have P squared minus P minus 6 equals minus 4P squared plus 30P minus 50. Take everything to one side, and let's see what that gives you. 5P squared, and then minus 31P minus 6 plus 50, that is plus 44 equals 0. This is what I'm getting from this, which is kind of weird.
because it doesn't look like it's going to factorize. So just to make sure it's correct, let's check our working. यहाँ पे हमने ऊपर सब सही किया. Multiplication p plus 2 into p minus 3. P square plus 2p minus 3p is minus p. That's fine. Minus 6. Numerator is okay. Denominator is 4p square minus 20p and minus 10p. That's minus 30p. That's also okay. Plus 50, which is fine. On the right side, we have minus 1. इसको हमने right side में multiply किया. Minus 4p square plus 30p minus 50. This goes to the other side. We have 5p squared. Yeah, that's okay. ठीक है, ये आ रहा है. अच्छा, let's see if we can factorize this now. इसके factorization कर लें या फिर इसमें quadratic formula use कर लें. That's our choice. 5 into 44. देखते हैं factorize कर सकते हैं. 220 आता है. 220 plus करके हमारे पास कैसे आ सकता है? 25 और 6 try करें. नहीं. 24 and 7. No. 20 and yeah, 20 and 11. That works. 20 and 11. So we can tell this is 5p squared minus 20p minus 11p plus 44 equals 0. We get two factors from this. 5p minus 11, and the other is going to be p minus 4. Okay, we get two values for p from this. P equals 11 over 5 or p equals 4, and that's what we were looking for. ठीक है. अच्छा, अगर आप quadratic formula use करेंगे, please make sure that you input values in the quadratic formula. वो steps दिखाने होते हैं, otherwise you don't get marks. अच्छा, p equals 11 over 5 and p equals 4. ये दो आंसर्स आ रहे हैं. अब जाके चेक करना पड़ेगा हमें कि क्या ये दोनों वैलिड हो सकते हैं. उसने अच्छा देखो क्वेश्चन स्टेटमेंट से पता चल रहा है. उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ p. जब भी मल्टीपल आंसर्स आ रहे हैं आपने देखना है, चेक करना है क्या वो दोनों वैलिड हैं कि नहीं है. उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ p. अब क्वेश्चन स्टेटमेंट है कि एक ही वैल्यू आनी चाहिए. दैट मींस not both of them are valid. Now how do you figure out if both are valid or not? हम जाके देखते हैं ऊपर उसने क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ है. यहाँ पे उसने कहा है p is a constant. वो तो सही है. oh yeah, so second part में उसने यहाँ पे लिखा हुआ है p is an integer. Okay, p is an integer. 11 over 5 is not an integer. तो इसको हम क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे. वैसे दिस इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, तो जब भी मल्टीपल आंसर्स आ रहे हैं, मेक श्योर दैट यू चेक द स्टेटमेंट. उसमें कोई हिंट होगी. अगर दोनों ना आंसर्स हुए कि अब चेक कर लें क्या दोनों पॉसिबल हैं या उस पर से कोई इग्नोर करना पड़ेगा आपको. तो यहाँ पे क्वेश्चन स्टेटमेंट में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p, एंड दैट द स्टेटमेंट्स आर वेरी एक्यूरेट, वेरी प्रीसाइज. इसका मतलब है कि एक ही आंसर होना चाहिए. अगर वो दो वैल्यूज होती हैं तो वो कहता है फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p और फाइंड द वैल्यूज ऑफ p. ओके, तो एक है तो आपने देखा क्या कंडीशन गिवन है. उसने लिखा हुआ है कि p हैज टू बी एन इंटीजर, सो यू ओनली कंसीडर द इंटीजर वैल्यू. Okay, so you only have to consider the integer value. Let's move on. Part 2 of this. It says find the equation of the circle which passes through a, b, and c, giving an answer in the form x square plus y square plus h plus by plus c equals 0. Equation of circle निकालनी है. Equation of circle आपके पास किस form में होती है? Standard form is something like this: x minus a whole square plus y minus b whole squared equals r squared. You need two things for finding the equation of a circle: radius and the center. ये दो चीजें अगर आपको मिल जाएं तो आप इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख सकते हो, राइट? नाउ हाउ डू यू फाइंड दीस टू थिंग्स? सेंटर कैसे निकालें और रेडियस कैसे निकालें? लेट्स हैव अ लुक एट दिस. द पॉइंट्स देयर ए बी और सी से पास करता है. ए बी और सी हमारे पास क्या पॉइंट्स हैं? अच्छा, ये पॉइंट्स ऊपर लिख लेते हैं. अच्छा देखिए, ये बी पार्ट के अंदर ही सेकंड पार्ट है. इसका मतलब है ये इंफॉर्मेशन अभी भी रेलेवेंट है कि ए सी और बी सी परपेंडिकुलर है. ओके, alright, so AC and BC are perpendicular. That's what we know. So अगर AC ऐसे है कुछ, this is A and this is C maybe, BC उसके perpendicular होगा. ठीक है, अब ये देखते हैं. A के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं पहले. A के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? हम लिख लेते हैं यहाँ पे 5 and -2. If A is 5 and -2, पहले कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिखें. A is 5 and -2. B was 10 and 3 I think. And C is 2p and p. P की वैल्यू हमें पता है. P की वैल्यू is 4. तो ये क्या हो जाएगा? C 8 and 4.
C के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं 8 and 4। अच्छा, अगर A हम यहाँ पे लेफ्ट पे रखते हैं तो C इधर हो सकता है, ठीक है, दैट्स ओके। A और C आ गए। अब BC कहाँ पे रहेगा? B C इज परपेंडिकुलर, और B का Y कोऑर्डिनेट थोड़ा कम है, X कोऑर्डिनेट ज्यादा है, तो B हो सकता है यहाँ पे नीचे कहीं पर हो, इधर उसके परपेंडिकुलर। तो this is what it's going to look like roughly, okay? B is here, और ये राइट एंगल बन रहा है, ठीक है। Now we know that the equation of a circle passes through A, B and C। कोई सर्कल है जो A, B और C तीनों से पास करता है, ठीक है, तो इस तरह का सर्कल हो सकता है। Maybe use a different color for that. So roughly it might look like this. This diagram is of course not very accurate, so it might be a bit misleading. It says थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, it'd be easier to draw. ये बस वैसे समझने के लिए सर। It might look something like this, a circle. Okay, something like this. You can try to visualize that. It may be something like this, okay? So it passes through all of those 3 points. Now, how do you find the equation of the circle? अब देखें, 90 degrees का angle should remind you of something. तीनों पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, सर्कमफ्रेंस पे लाई करते हैं, 90 डिग्रीज का एंगल बना रहे हैं। Does that remind you of a circle property that you have? Remember, diameter जो होता है वो 90 degrees बनाता है circumference के ऊपर, and any other chord in a circle cannot make a 90 degrees. So if AB is making a 90 degrees on the circumference of the circle, that necessitates that AB is a diameter. Okay, so if angle ACB is 90 degrees, इसका मतलब क्या है? AB has to be the diameter of the circle. And if you're able to figure that out, the rest is pretty straightforward after that. Okay, AB diameter है, इसका मतलब क्या है कि हम सेंटर निकाल सकते हैं। फिर सेंटर कैसे आएगा? It's just the midpoint of AB. Okay, center is just the midpoint of AB. Let's evaluate that. AB का midpoint हमारे पास पॉइंट ऊपर गिवन है, 5 + 10 over 3 and -2 + 3 over 2. Oh, why am I doing 3 there? 5 + 10 over 2 and -2 + 3 over 2. And the center turns out to be 15 over 2, which is 7.5. लेकिन आप fraction में रखेंगे इसको, and 1 over 2. This is the center. Center आ गया। अब दूसरी चीज आपको क्या चाहिए? रेडियस चाहिए। रेडियस के लिए हम क्या करते हैं? सेंटर अगर O है तो हम कोई भी डिस्टेंस निकाल लें, OA निकाल लें, OB निकाल लें, OC निकाल लें, या AB निकाल लें, AB का हाफ कर लेंगे, राइट? कोई भी डिस्टेंस निकाल लें। इनफैक्ट हमने AB ऊपर कहीं फाइंड भी किया था, आई थिंक AB डिस्टेंस, डिड वी? ओके, वो P के टर्म्स में था, चलें तो बाहर नहीं, AB नहीं हमने फाइंड किया था। AB डिस्टेंस निकाल लें, उसका हाफ कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन आ रही है, थोड़ी सी ज्यादा मुश्किल कॉम्पिटिशन हो जाए, मतलब कैलकुलेशन आसान हो जाएगी अगर हम AB फाइंड कर लें। लेट्स फाइंड AB। AB क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 10 - 5 होल स्क्वायर्ड प्लस 3 + 2 होल स्क्वायर्ड। इससे आपको क्या मिलेगा? डायमीटर मिल जाएगा, ठीक है। 5 squared + 5 squared, that's just 25 + 25, and which is square root of 50. Okay, ये diameter आ गया। Diameter अगर ये है तो what about the radius? Radius is going to be half of this. Square root of 50 को आप कैसे लिख सकते हो simplified form में? या ऐसे रहने देते हैं, बाद में स्क्वायर ही करना है। In any case, so radius is square root of 50 over 2. This is the radius. ठीक है। Now we have the radius in the center. We can write down the equation of the circle. The equation of the circle looks like this: x - a whole squared plus y - b whole squared equals r squared. उसमें बस values input कर दें। The equation is going to look like this: x minus a, which is x minus 15 over 2 whole squared, plus y minus b, that's y minus 1 over 2 whole squared, equals r squared. r क्या है? square root of 50 over 2. इस पूरे का हम स्क्वायर कर देते हैं। Let's see what we get from this.
उसको सिंप्लीफाई कर लें। उसने कहा हुआ है कि आपने इस फॉर्म में आंसर देना है, ठीक है, तो उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली। सो लेट्स डू दैट। एक्स स्क्वायर minus 2 into x into 15/2, that's going to give you 15 times x plus 15/2 ka whole squared, that is 225/4, plus y squared minus 2 into y into 1/2, that's going to be y, plus 1/2 ka square, that's 1/4. On the right side you have square root of 50/2 ka whole square, that's going to be 50/4. Multiply the whole equation by 4 to simplify this. That is going to give you 4x squared minus 60x plus 225 plus 4y squared minus 4y plus 1 minus 50 from the other side. Now you simplify this, and that gives you 4x squared. Yeah, so 4x squared plus 4y squared minus 60x minus 4y, and we have 1 minus 50. 1 minus 50. Do we have another? Yeah, 225 here. 225 plus 1. What does that give us? 226 minus 50. That's 176 equals 0. Now we can simplify this. Remember, circle में आपके पास x square y square होते हैं. इसको 4 से divide कर दें. What do you get from that? X square plus y square minus 15x minus y plus 176 divided by 4, and that's giving me 44 equals 0. And that's the equation of the circle that we were looking for. Okay, I hope that makes sense. Unless no, in part A, AC and BC were perpendicular lines. उसने perpendicular लिखा हुआ था, parallel तो नहीं थी. अच्छा नहीं, part कौन से part की बात करें? Part A नहीं, उसने equal लिखा हुआ था, length उनकी equal है, parallel है कि नहीं है वो तो हमें नहीं पता. पैरेलल को तो हमें नहीं पता, उसने बस इक्वल कहा था, लेंथ इनकी इक्वल है, वो कहीं भी हो सकते हैं, राइट? हो सकता है आपके पास ए सी इस तरह होता और बी सी इस तरह होता, they're not necessarily parallel, उनकी लेंथ इक्वल है बस. Okay, acha, that's it. That was the final question that we had here. I hope that was helpful. I'll see you again later for M1 tonight. I'll be doing M1 with paper 4, variant 3 of October and November 2022 after some time, maybe around 8 p.m. inshallah. Okay, I'll see you then. Allah Hafiz.